तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से थोड़े लेट से मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ दोस्तों। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, विशेष शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है 23 सितंबर 2025 को, उसको लेकर है दोस्तों। राज्यों का भर्ती का डाटा जो है पेश किया गया है और मैक्सिमम सभी राज्यों ने डाटा अपना पेश कर दिया है। क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पूछा कब होगी विशेष शिक्षक भर्ती, देरी का असली कारण बताने को बोला गया है। तो देखिए, उसमें कुछ प्रमुख राज्यों पे जो चर्चा हुई है उस पर दोस्तों आज की वीडियो में बात होगी। तो देखिए, जो मुख्य बात है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। देखिए, जो मुख्य विषय है दोस्तों, सभी राज्यों में आरसीआई क्वालिफाइड विशेष शिक्षकों की भर्ती में देरी पर कंटेम्प्ट पिटीशन डाला गया है। उस पर जो है दोस्तों यहाँ पे सुनवाई हो रही है और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण पर प्रगति रिपोर्ट मांगी है, जो कि सभी राज्य धीरे धीरे दे रहे हैं। और इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर जो था 23 सितंबर 2025 को कोर्ट नंबर 9 में आइटम नंबर 35 पर जो है जस्टिस दिवाकर गुप्ता और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में जो है सुनवाई हो रही थी। और इस डेट में झारखंड, दिल्ली, मेघालय, उड़ीसा राज्यों में कंप्लायंस की सुनवाई हुई। तो मुख्यतः जो है इस डेट में आपको दिल्ली, ठीक है, झारखंड, मेघालय, उड़ीसा और राज्यों में कंप्लायंस की स्थिति पर भी दोस्तों सुनवाई हुई थी। दिल्ली के लिए तो कहें तो बहुत ही सख्त लहजे में बोला गया है, क्योंकि जो वकील थे वो बोल दिए कि ये मतलब दिहाड़ी मजदूर लेबर इनको बोला गया दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को। तो उसको लेते हुए जो है जज साहब काफ़ी नाराज़ भी हुए, हंसी भी आई उनको कि ऐसा एक टीचर्स को आप लेबर कैसे बोल सकते हैं। और इसको लेकर दोस्तों काफ़ी सख्त हुआ। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं झारखंड को। तो देखिए, झारखंड की सुनवाई में 211 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट टीचर माना है और 109 आउटसोर्सिंग के तहत जो है बहाल टीचर को वैध नहीं माना। फिर भी उनकी तरफ से वकील द्वारा बहस करने के उपरांत सरकार को नोटिस भेजने के लिए आर्डर किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की सुनवाई हुई। इसमें 1500 कुछ कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक की संख्या बताई गई, जिसमें से 1400 को सही माना है। बाकी 100 लोगों को अयोग्य बताया है, क्योंकि उनके पास CRCI जो CRR नंबर है वो एक्टिव नहीं है। और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पष्ट किया है कि ऐसी क्या दिक्कत है कि आप गेस्ट टीचर्स को या संविदा शिक्षक को या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को या डेली वेजेड शिक्षक को आप ऐसे क्या रीजन्स है कि आप परमानेंट नहीं कर सकते। जब ये 1400 लोग योग्य हैं तो इनको क्यों नहीं आप कर सकते। तो इस पर कोई स्पष्ट बोल नहीं पाया। और कुल मिला के जो फैसला है दोस्तों, जो जज साहब का जो रुझान है वो यही बता रहा है कि जो है अब दिल्ली में जो है जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके फेवर में ये आर्डर जाता हुआ दिख रहा है। जो भी लगभग ये 1400 जो योग्य हैं उनको ज़रूर जो है नियुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा बिहार की बात करें दोस्तों, तो देखिए, बहस के दौरान बिहार के 816 कॉन्ट्रैक्ट टीचर को सही माना है स्क्रीन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। जो स्क्रीन कमेटी है उसके आधार पर जो है बिहार में जो है 816 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं जो कि उनको सही माना गया है। और इसके अलावा मेघालय की बात करें तो दोस्तों देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मेघालय को भी ऐसा ही माना गया। यह एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। और जो मुख्य बातें हैं दोस्तों वो यही है कि बहस के दौरान मुख्य अंश सामने निकल कर यही आया है कि कार्यरत शिक्षकों के लिए स्क्रीनिंग ही मुख्य बिंदु है। तो जो इतने भी कार्यरत दिहाड़ी शिक्षक कह सकते हैं या संविदा शिक्षक कह सकते हैं या डेली वेजेस शिक्षक कह सकते हैं, गेस्ट टीचर्स बोल सकते हैं, ऐसे जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स लगे हुए हैं उनके पक्ष में 23 तारीख का डिसीजन रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो रुझान दिखा वो यही है कि जब इनके पास मिनिमम योग्यता जो होनी चाहिए वो है, अगर वो टेट पास हैं, वो जो योग्यता होती है कि DED स्पेशल एजुकेशन या BEd स्पेशल एजुकेशन, अगर वो सब चीज़ें उनके पास है प्लस टेट सीटेट पास हैं, तो उनको क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों स्थिति स्पष्ट है। आने वाला समय जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं लगे हुए उनके लिए सुनहरा होने वाला है और सबको जो है यहाँ पे अब अस्थायी नियुक्ति मिलने वाली है। तो ये थी दोस्तों अभी तक के अपडेट। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।
examining the case of each of the candidates who have been working on contractors to daily basis. Sorry to interrupt. Screening committees on the previous page. The Lordship have seen that? Page 12. Meanwhile, we have been informed. So because of this, and all of us are on contractual basis, your Lordship said they have been continuing for 20 years approximately. For these reasons, states shall immediately constitute a screening committee. This is a screening committee. After which, on the following page, the screening committee shall examine the case of each of the candidates who will be working on contract daily wage basis to teach these children, and those teachers who have been found to be competent, eligible, and qualified to teach shall be given the pay scale of special teacher. The past experience of these teachers shall also be kept in mind. However, the mandatory requirement for each of the candidates would be RCI qualification. Now, Delhi seems to be stopping at the full stop and not reading beyond. So let me read beyond. Further, in case of a person who was already working and teaching for the last many years, the screening committee shall also be authorized to consider relaxation of the age limit in appropriate cases. Let all of this be completed within a period of 12 weeks from today, which will include the 3 for the sanctioned posts which have to be identified. We make it absolutely clear that the benefits of pay scale will only be prospective and not retrospective. That is from the date of their such appointment after selection. They will be appointed against the sanctioned post and shall be given the pay scale which is to be given on that post only after screening. And then again, last few lines of the report, what does this imply? So they will be appointed. Screened. Yes, the screening committee will go through it. Each of us will be looked at, called, each of us given whatever benefits like relaxation or age limit. Your past experience will be considered. Correct. But if you are not found competent or eligible, you're out. We're not that. We are those who are found competent, who are found eligible. We have RCI requirement, all of us. But that further step of appointment is required because the code is here. They will be appointed against the sanctioned post and shall be given the pay scale which will be given on the post only after screening. Has the screening committee found these contractual? Yes, that's what the affidavit says. The affidavit gives the numbers. It gives the exact number. The affidavit gives the exact numbers as to how many are eligible. If your Lordship sees para 8 of the Delhi affidavit, there's a table, it's page 10 of the Delhi August affidavit. What's on page 10? Para 8. It is submitted that the screening committee was constituted in terms of the order of this court. The committee scrutinized the candidates of all the SETs working on contractual basis, etc. Summary of data related to SETs is under. Now, if your Lordship sees the various columns, just come to column 5. Number of candidates, special educators working on contractual daily basis who are having RCI qualification is 155. Now, this is what the learned Amicus has put in a chart. Next column, number of candidates, special educators working on contractual daily basis whose RCI registration is active, which is 1443. So we are part of this 1443 where our RCI is active. Now, on the following page, if you see para 9, the government mentions what they are doing with reference to pay scale only. But as far as appointments is concerned, which is what we are concerned with, which is why we exercise about the fact this 1443, have they been interviewed or have they faced the procedure? Therefore, it's after this procedure. This is after the screening committee has looked at it, that these numbers have come. 1443. Yes, 1443 who have their RCI registration active. RCI registration being active is one thing. Yes. And the screening committee finding them eligible or suitable for appointment is another thing. No, so if you see the first 3 columns, like that, just see the first 3 columns. Total number of candidates they mentioned. Number of candidates working on contractual basis who got documents verified. So document verification is done. After which working who did not report is 0. All of those who reported with RCI qualification, which is active is 1443 and the number is. Whether you have been recommended by the selection committee? No, that's my understanding. That's not the. Further, in the Senate meeting, it was decided. What is your instruction? It does not say so. This is absent. Said that relaxation in age will be given to SETs who are working as. So it's under process. We are considering, the screening committee is considering them. But Lordship, as regards regularization, Lordship, as far as Delhi's understanding is concerned, we have understood that this is a stopgap approach. So no. Because we want a better affidavit from. Can I just draw your attention that just for this understanding, the last audit, Mr. Gopal, you have a registration. Yes. You will be given age relaxation, your experience will be counted, everything right. Yes. Have you been tested by the screening committee? That they have to answer because it's our understanding that they have. Did you appear before the screening committee? Is the problem? Yes. That's the problem. Okay, if it is in the process, we have been screened. In fact, if you see your Lordship's last order, where you dealt with Meghalaya and Bihar, both those states' understanding is different from Delhi's understanding. Delhi's understanding is stopgap. Those states have specified the numbers. They've said, in Meghalaya, for example, the process of screening the 106 special teachers who have requisite certificate by RCI is in progress. And the final decision as to whether these 106 teachers should be regularized will be taken by 31st October. So based on that, and in behalf of the same thing, it is further submitted that 816 posts have been kept apart for being filled up by contractual ad hoc teachers upon verification of document. Now, this is a consistent, I think, consistent understanding. We want a definite stand of the state of Delhi. Yes. As to after considering these 1443. Yes. They have, all of them are eligible. Or some of them are eligible. What is your decision? They said so. Para 10. Yes. After mentioning the relaxation in age, last sentence. Further in the Senate meeting, it was decided, concluded, that SETs working as contractual guests on daily wage basis shall remain as contractual guests. After your Lordships have said. Your Lordships want to know how many are. What a better affidavit. Yes. What and 2 thoughts. Screening committee and regular. Why are you 23523? I am also in contractual labor. I will marking things. You are labor teacher. You are teacher. Don't say you are labor. Don't reduce teachers to labor. I say if they are teaching my children, it's labor works. I used to be a contractual teacher, working for the